A parallel beam of light of wavelength 560 nanometer falls on a thin film of oil having the refractive index 1.4. What should be the minimum thickness of the film so that it strongly reflects the light? ये ऑयल फिल्म है पानी के ऊपर, ना कहीं पर ऑयल फिल्म रोड पर या कहीं पर, उसका क्वेश्चन है. पैरेलल बीम का वेवलेंथ दिया हुआ है एंड इट इज़ फॉलिंग ऑन टू द थिन फिल्म ऑफ ऑयल. तो उस थिकनेस का उस फिल्म का थिकनेस कितना होगा ताकि वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो सके. इसके लिए सम बेसिक इज़ रिक्वायर्ड which is not in the NCERT, but that basic you have to see it first. Here this is the oil film, and here the refraction takes place. Refraction 1, 1, 2 like that. Here at this particular point what is happening, यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ यहाँ पर भी. तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं द पाथ का डिफरेंस बन रहा है. एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर, एक्चुअली द लाइट ट्रेवल्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी एंड सी टू डी, बी टू सी एंड सी टू डी. यहाँ से रिफ्लेक्ट वाला पार्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, तब यहाँ पर फिर रिफ्लेक्ट हुआ टू रीच द पॉइंट पी. पॉइंट पी पर आने के लिए ये दोनों रे में हम क्या देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया रे ऑफ लाइट. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज योर बी सी प्लस सी डी बाय दिस सेकेंड रे ऑफ लाइट. सो देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस. सो द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन बी पी एंड डी पी, बी पी एंड डी पी में ये दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा. ये दोनों तो लगभग सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली डी एंड डी ट्वाइस डी. सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विल बी डेल एक्स इक्वल टू 2 म्यू डी. दैट वी नो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम लोग जानते हैं म्यू इंटू डी होता है. अगर डिस्टेंस डी है तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है. हियर द ट्वाइस डी इज हियर, सो 2 म्यू डी. The constructive interference takes place and film is seen illuminated if that path difference is equal to n plus 1 by 2 lambda, that is 2n plus 1 lambda by 2. That condition we have to remember, path difference. So that we have to use. ये concept हम लोग को use करना होगा, that formula. The same here. This particular question, a parallel beam of light of lambda, this, which we have discussed. Now, here given lambda is equal to 560 nanometer. That means 560 into 10 to the power minus 9 meter. And mu is given 1.4. So for strong reflection, putting n is equal to 0, so d will be for a strong reflection, that's the condition we have to write first, that 2 mu d is equal to 2n plus 1 lambda by 2. ये कंडीशन था, अभी हम लोग डिस्कस किया था. दिस इज द कंडीशन. सो this your condition. So the minimum thickness के लिए हम लोग n is equal to 0 पुट करेंगे. तो n is equal to 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d is equal to lambda by 4d. So find out the value of d. So d will be, put the value, इसका वैल्यू पुट कर दिए, 560 into 10 to the power minus 9 by here it is d into 4, that is around, d is given 4 into, d is given d
सो मिनिमम थिकनेस n इक्वल 0, d इज इक्वल टू दैट मैच इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर d इज इक्वल टू इतना 4 म्यू, लैम्डा बाई 4 म्यू, म्यू इज गिवन 1.4, so that is around, if you are going to calculate, you will have 100 nanometer in terms of nanometer. That should be your answer. Another interesting question: light of wavelength 560 nanometer goes through a pinhole of diameter 0.2 nanometer and falls on a wall at a distance 2 meter away. What will be the radius of the central bright spot formed on the wall? So here also some fundamental is required, because that fundamental is not in your class 12 syllabus. So what should be that particular the concept is that the Fraunhofer diffraction of by the circular aperture. Here the circular aperture is there. If the ray is diffracted, the angular diffraction, here the d, here the source, and this light is diffracted from inside this particular aperture. So mathematical analysis shows that the first dark ring is formed by the light diffracted from the hole, this hole, at an angle theta with the axis sine theta is equal to 1.22 lambda by b. What is this lambda? Lambda is your wavelength of the light used and b is the diameter of the hole. If d is capital D is greater than the small b, the radius of the first dark ring is equal to r is equal to 1.22 lambda capital D by small d. That's a very important formula which is not in the class 12 syllabus. So the light of this goes through a pinhole, diameter is given in this particular question. The same formula we have to use. Here r is equal to 1.22 lambda capital D by small d. Put the value 1.22 into 560 into 10 to the power minus 9 into 2 by small d, that is 2 into 10 to the power minus 4. So that comes out to be around 6.8 into 10 to the power minus 3. So that should be the radius. And the question, what will be the radius? Itna radius hoga, itna meter. Radius of that. Okay.